Today is our first lecture about the statistics, educational statistics. First, you know about it. What is stats? The term statistics refer to a set of methods and rules for organizing, summarizing, and interpreting information. We already discussed in the class, like what is stats. Stats is referred. We are having different methods and rules and regulation through which we can organize some data. We can analyze some data. We can make inferences of information about some data, or we can generalize the information, we can summarize the information. So stats क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज कर सकते हैं, इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं. Like we have a lot of information, and if we want to summarize that information, we can use the statistic. Statistic is a way of gathering information and data. Through stats is a tool, or we can say it is a technique through which we can collect the information and collect the data. In statistic, when we are calling data, it's mean information. Whenever I am using the term data, it's mean information. Like if we want to get the data of anything, we can use the statistic. And I want to know the information, or I want to get the data about the online education affects students learning. Yeah, online education improves students learning, if it is my one hypothesis. So what I will do, I will go and I will use statistic, and through which I can get the data, I can analyze the data, I can summarize the data, I can make the references, I can draw the conclusion, and I can draw the results. Okay, whatever the topic is. So the next slide. According to American Heritage Dictionary, statistics defined as the mathematics of the collection, organization, and interpretation of the numeric data, especially the analysis of population characteristics by interference from sampling. अच्छा, हमारी So हमारी stats क्या है? Basically, it is a mathematical collection of. प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें. मैंने यहाँ से भी म्यूट किए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेते हो. इवन मैं अभी कोई ऑप्शन सर्च करती हूँ जिसकी वजह से आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर ही ना सकें. अब जैसे आप लोगों की आपस की बातें होती हैं, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. राइट. सो एट द एंड, और वेन एवर आई आस्क अ क्वेश्चन कि भाई आपका क्वेश्चन क्या है, देन आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल आंसर इट. राइट. ओके, कम बैक टू द पॉइंट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द डेटा, we can organize unorganized data. Like we have a raw data and we can organize it, and that organized data is easily interpreted and easily understood. So all the numerical data we used in statistics, or analysis of population characteristic. If we want to know the population characteristic, like हमारी population की characteristic क्या है, हमारी population है किस तरह की, ठीक है, तो उसको जानने के लिए भी हम जो हैं stats यूज करते हैं. राइट. Difference between stats and statistics. Stat is a parameter, while statistic is a measure that how the work have to be done. Stat एक अगर हम लें तो वो parameter है, मतलब कि एक method है जिसको हम use कर सकते हैं. और statistic क्या है कि हमने वो parameter किस तरीके से use किया. Like हम कह सकते हैं the mean या t-test is a parameter, right? और अब t-test को हमने टी टेस्ट को हमने यूज कैसे किया, यूटिलाइज कैसे किया, उसके थ्रू एनालिसिस कैसे किया, दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स. राइट. देन व्हाई स्टडी स्टैटिस्टिक्स? अब why we are studying the statistics in social sciences, we have to study the statistic because
It is compulsory. Like we have data everywhere, right? You have the information everywhere. If you are a teacher and you want to know how can you improve your teaching, and if you want to do to improve the learners learning, right, you want to do a research. So for the research you use statistic, right? Statistical technique are used to make many decisions that affect our life. Like I gave you the example that as a teacher you want to improve your teaching, or you want to improve your teach students learning, you use research, or you are conducting action research, or any research, any type of research you are conducting, and you are making some decision that is affecting your skills, that is affecting students life or your life. That's why we are using statistic. In daily life you are using statistic. Okay, when you are going to buy something in the market, आप वहां पे भी stats use कर रहे हो, राइट? आपने कोई भी एस्टिमेशन लगानी है कुछ, इवन इफ यू आर अ मदर और इफ यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर डूइंग कुकिंग, इन दैट कुकिंग एज वेल यू आर डूइंग, you are using statistics, right? In any area, in any field, you are using statistics. So we are saying statistic is applicable in every field of life, right? No matter what your career, you will make professional decisions that involve data. ठीक है? अब ये पहले से हमने बता दिया कि ये हम ये नहीं कह सकते कि ओके स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो ही ओनली यूज करेंगे, दे आर लिमिटेड टू यूज द स्टैटिस्टिक, एजुकेशनिस्ट तो यूज ही नहीं करेंगे. नो, इफ यू आर एजुकेशनिस्ट यू आर यूजिंग द डेटा, इफ यू आर अ डॉक्टर यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिक. हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है. ठीक है? आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी स्कूल जा रहे हैं, वहां पे भी स्टैट्स यूज हो रही है, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर वो जो है यूज करेंगे. नहीं है, उसकी बेस के ऊपर वो जो है मेरिट बनाएंगे, एडमिशन देंगे, आपकी जो ग्रेडिंग है दैट इज आल्सो यूज्ड स्टैटिस्टिक, राइट? सो स्टैटिस्टिक इज एवरीवेयर. Then, an understanding of statistical method will help you make these decisions effectively. अब अब जब आपके पास इसकी simple example है, when you have two alternatives, you want to make some decisions and you have two alternatives, you don't know which one is best. On that you are using statistic, और फिर आपने analysis किया और आपको पता चला okay this alternative is better than the one. Okay, तो आपने stats के through आपने decision किया, right? Then importance and scope of statistic. We live in the information world where most information is determined mathematically with the help of statistics, right? We have a lot of information with the use of math. We are understanding with the use of with the help of statistics, right? अब जैसे कि इसकी और एग्जांपल, जैसे आप परचेज करने जा रहे हैं, आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, वहां पे आप स्टैट्स यूज कर रहे हैं. It means statistics keep us informed about daily happening. Like even अगर आप लोग नमाज पढ़ते हो उसमें भी आप स्टैट्स यूज कर रहे होते हो. ठीक है? आप लोग अगर रात को सोने से पहले अपना एनालिसिस करते हो कि भाई ओके आज के दिन हमने कितने गुनाह किए, कोई कितनी अच्छी नेकियां की, उसमें भी आप स्टैट्स यूज कर रहे हो. आप फिर जर्नलाइज करते हो कि ओके अगर मेरी आज इतनी नेकियां नहीं हुई, मुझे आज इतना मौका नहीं मिल सका कि मैं कोई अच्छा ही कर सकूं, तो मैं नेक्स्ट टाइम, आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि हम मैंने ये काम करना है, आपने इन्फ्रेंसेस बना लिए, आपने डिसीजन कर लिया, आप स्टैट्स यूज कर रहे हो. लाइक स्टैट्स यू कैन यूज इन एवरीवेयर, और आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो. वेदर फोरकास्टिंग इज पॉसिबल ड्यू टू सम कंप्यूटर मॉडल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट टू प्रेडिक्ट वेदर. अब जैसे कि हम लोगों के पास मोबाइल में वेदर फोरकास्टिंग है, हम लोग बता सकते हैं, वो भी कैसे मिल रहे हैं, वो भी स्टैट्स के थ्रू आ रहे हैं, right? Researcher use statistical technique to collect relevant data. As a researcher, why we are using the statistical technique? So that we can get in relevant data, we can delete the irrelevant or misunderstood data, or jo data that is not authentic, which is not reliable, we can easily skip that data with the help of statistics. Okay. um, Statistics is frequently used by the researcher. They use statistical technique to collect relevant data. Okay, ये तो खैर हमने डिस्कस कर लिया.
Okay, statistical technique are a key of how traders and businessmen invest and make money. अब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज और कोई भी स्टॉक मार्केटिंग देखते हो, या इवन कोई भी बिजनेस है, इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड, यू आर वर्किंग एज अ, यू आर डूइंग सम जॉब, आप वहां पे भी स्टैट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी की इन्फ्लेशन है वो हमें कैसे पता चल रही है? थ्रू स्टैट्स। इंडस्ट्री टूल्स आर यूज इन क्वालिटी टेस्टिंग बाय प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है, अब क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? ठीक है, इवन आपने अपना ब्लड चेक करना है कि भाई मेरा ब्लड नॉर्मल है या मैं एनेमिक हूँ, राइट? तो वो कैसे चेक करोगे? थ्रू द स्टैटिस्टिक, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। आपने अपनी डायबिटीज चेक करनी है, अपने स्टैट्स के थ्रू चेक करना है, राइट? क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्राइब है कि आपकी इतनी है, अगर आपकी 5 है तो आपकी बॉर्डर लाइन, या आप नॉर्मल है, 5 अबव है, 6 पे है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो 11 और 7 और 8 पे हैं तो इट्स मीन यू आर अ डायबिटिक, राइट? तो ये क्या हमें स्टैट्स ही तो बता रही है। ठीक है, statistics play a big role in medical field. Before any drug prescribed, pharmacists show statistical valid rate of effectiveness. अब इवन हमारे पास जो मेडिसिन हैं उनका भी फार्मूला चेक कर रहे होते हैं। हमें अक्सर हम ले मैन में कहते हैं कि हम जब स्टोर में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, तो वहां पे हमें कहते हैं ओके, ये वाली मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इस कंपनी की आप ले सकते हैं, सेम फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो स्टैट्स तो है कि वो बताती है ये फार्मूला है, वो ये अफेक्ट करेगी, राइट? तो सिमिलैरिटी और फिर उसकी वैलिडिटी, उसकी डेट वो उन्होंने उस हिसाब से बनाई होती है कि दिस इज वैलिड फॉर टिल डेट, और ये वैलिड है फॉर दिस डिजीज। ठीक है, ये रिलायबल है फॉर दिस डिजीज। ओके, similarly, statistics is behind all other medical study. Doctors predict disease on the basis of statistical concept. इवन मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करूं, दे आर ऑल्सो प्रिडिक्टिंग और डायग्नोसिंग एनी डिजीज थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। चलो हम तो बाकी कहते हैं ना कि बाकी मेडिकल टेस्ट कर लेते हैं, राइट? तो उसके थ्रू, या वो हमारे से डिफरेंट टेस्ट करवा रहे होते हैं, उससे वो कहते हैं कि ओके आपको ये डिजीज है। अब साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं? वो भी थेरेपीज यूज कर रहे होते हैं, वो भी टेस्ट यूज करते हैं, वो स्केल होता है, वो स्केल को फॉलो करते हैं, जो उनका पहले से डिसाइडेड स्केल है, क्योंकि इतना लेवल आया तो इट्स मीन ये इसको डिजीज है। ठीक है, इतना स्कोर नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या है? तो ये क्या है? सब ये सब स्टैटिस्टिक है, right? So we can say statistic is everywhere. We are using statistic in our life. function of function of statistic क्या है? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। सबसे पहला और मेन जो फंक्शन है, जो वर्क है, कि हमें जो इंफॉर्मेशन है ना, वो फैक्ट्स को एक अच्छे प्रेजेंटेबल और अंडरस्टैंडेबल वे में हमें बता रही होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन है क्या। टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कम्प्लेक्स डेटा। जितना कम्प्लेक्स डेटा है उसको बड़ा सिंप्लीफाई में कर देती है। जैसे कि हमारे पास रॉ डेटा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसमें हमारे पास हाई अचीवर कौन से हैं, तो जब हम उनको मीन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं डेटा, तो स्टैट्स के थ्रू हमने मीन लगाया और मैनेज किया, तो हमें इजीली पता चल गया कि हमारे जो स्कोर्स हैं, हाई अचीवर स्कोर्स कौन से हैं, वो हमें इजीली पता चल जाता है। टू enlarge individual experiences through the stats, we can more expand the individual experiences to provide guidance in the formulation of policies, right? If we are going to make any policy, that statistics help us, uh, this give us the information. Like if we are going to make educational policy, the educational statistics and previous researches and the information that help us to draw a policy or to formulate rules and policy, right? So to enable measures of the magnitude of a phenomena, so we can conclude that whatever the magnitude or whatever the product or field is there, if we want to understand it, we have to use the stats. Through stats we can measure the product, we can understand the information, we can understand the data, and we can make the inferences. It will help us to make the decisions, it will help us to draw a conclusion, and we can draw or we can conclude the result as well with the help of
statistics. So limitation of statistics is the use of statistic is limited to numerical studies. That is only limited to numerical study. If we have a qualitative study, like we in social sciences as well, we are using qualitative studies as well, right? So for that we have to convert in the numerical study, then we can analyze that information, right? So statistical result might lead to the false conclusions. So we can, if we are our result, so that's why we are saying that is 90% or 0.5%, we have the probability level, right? Why we have the probability level, like zero point 0.5, if we mostly we are using zero point 0.5 level probability level, it's mean we have 0.5% chance of error. Like false information is there, we are not saying we are 100% true, there is a false information or error is there, okay, but we are ignoring that error, but we cannot reject that the stat is not good, we have to use the stats, okay, but we are showing and we are presenting that we may have a chance of error is 0.5, 0.5, 0.001, right? So statistics relies on estimation and approximations. That's why we are relying on approximation estimations, right? We are saying estimated is a population is like this, or approximately population behavior is like this. Okay, whatever the our hypothesis is. So statistical technique deal with the population और aggregate of individual rather than with the individuals. ठीक है कि हमने उनकी aggregation population की बनानी है, individual के साथ नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था we have to generalize the information. ठीक है, inferences हम बना रहे हैं stats पे and we are generalize that information, that's why this is स्टैटिस्टिक्स. सो हम इसको अगर लिमिटेशन स्टैट्स की बात करें तो ये एक उसकी लिमिटेशन है कि हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं लिमिटेड, हम इंडिविजुअल के बारे में सिंगल इंडिविजुअल का नहीं बताते, हम उसको एज अ पॉपुलेशन उसको डील कर रहे होते हैं. एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, like in educational research, in education setting, how we can apply the statistics enters in the process right from the beginning of the research, when whole plan for the research, selection of design, population sample analysis tools and technique etc is prepared. Like we cannot say that in social sciences or in education statistics role is coming at the end of the research. No, when you are selecting or when you are in the on the phase of selection of the topic, you are using the statistic. Okay, so statistic is whole plan, like when you are making the synopsis and when you are selecting the design, selecting the topic as well, and you are selecting the population sample, there is a stats, और स्टार्ट वहां से स्टार्ट से ही यूज हो रही है. ओके, देन हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, बिकॉज स्टैटिस्टिक इज डिवाइड इनटू टू फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक? As the name implies, describe the data. Descriptive statistic consists of the method for organizing and summarizing information. Like we have a lot of information and we want to summarize that information. Okay, we can organize that information, that is a descriptive statistic. Okay, these are statistical procedures that are used to organize, summarize or simplify data. Like our data is very complex, very complicated, and we cannot manage that data, and if we want to manage it, that we are using the descriptive. जैसे हम अपने बिखरे हुए डेटा को सीधा कर रहे होते हैं, समझ आ जाए कि वो डेटा है क्या, किस बारे में है, तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करें. हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइज कोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ. ठीक है, तो वो टेबल और ग्राफ की फॉर्म में हमें समझ आ जाता है कि कि हमारा डेटा है क्या और किस बारे में है, और डेटा का मतलब क्या है, यानी उस डेटा में है क्या चीज, वो हमें पता चल जाता है, right? Then we have an inferential statistic. Inferential statistics are techniques that allow a researcher to study samples and then
make generalizations about the population from which they are selected. In descriptive statistics, we cannot generalize the information, we cannot make the inferences. But the main difference between statistic and descriptive and inferential statistics here is, in inferential we make the inferences, and on that inferences will be tested, and after that we may make the generalization on the population, because we make the inferences about the population characteristics and about the population, and after the analysis we can generalize that results on the population. This is the main differences in inferential and descriptive statistics. Okay. Okay, we were discussing about the variables. It is the parameter, characteristics, or attribute which is usually recorded in an experiment. So, in stats or in social sciences or in research, we are using the term variable. What is variable? Variable is anything, any parameter where we can measure the characteristics or any quality or anything which is observable, which is experimentalable. Okay, जिस चीज को हम measure करने जा रहे हैं, that is called a variable, right? For example, variable is a gender and attribute may be male and female. Like one variable is male and female, that is also a variable. If I am saying technology increase students learning, technology is also a variable, student learning is also a variable, right? So we have a variable in our researches through which we can measure that attributes. Okay, this is called the variable. The variables that yields numerical information measurement are called quantitative. We have a qualitative variable, quantitative variable. Okay, two types of variables are there. Variable, those variable which are numerical in description. Okay, we can measure it numerically, that is called quantitative, and those numerical which is non-numerical, those variable which is non-numerical that have a qualitative characteristics, we call them qualitative or a categorical variable, right? A scale of variable gives certain structure of the variable and also define the meaning of variables. Any scale, any measurement of scale is giving a different meaning of variable, like ordinal, nominal, interval, ratio. That is defining the scale is different way, and on that their definition we can deal them in differently. हर वेरिएबल और हर स्केल हम उसको डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, मतलब उसका एनालिसिस करते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ वेरिएबल, न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल. न्यूमेरिकल वेरिएबल में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है, कैटेगोरिकल में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल है. अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली ये मेजरमेंट स्केल हैं क्या. सबसे पहले नॉमिनल स्केल है. नॉमिनल स्केल with the name represent that have the name is a attribute and that name is a unique quality of that scale, we call nominal scale. अब nominal scale की example जो है, that is a big example of your roll number or even your names, or even in marathon the number is there. हर जो athlete का जो नंबर होता है, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज अ नॉमिनल स्केल विच रिप्रेजेंट देयर कैरेक्टरिस्टिक, विच रिप्रेजेंट दैट पर्सन. अब जैसे आप रोल कॉल लेते हो क्लासरूम के अंदर, दैट रोल नंबर इज अ नॉमिनल स्केल विच रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पर्सन. ओके, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल स्केल. I hope it is understood. Then ordinal scale. Ordinal level variable are nominal level variable with the meaningful order. Ordinal scale means the order scale. We have the that nominal scale but have some order, meaningful order which show us some order possible. Okay, which show some differences. Sorry, which show some order or order in those variables. True differences are not possible, just order possible. Like what are the true difference between two variable, that is not possible. ठीक है, वो हमें नहीं बता सकते, ऑर्डिनल स्केल नहीं बता सकता. लाइक लाइक हमारा ऑर्डर है लोअर, मिडल, हाई अचीवर, दैट इज अ ऑर्डर स्केल, ऑर्डिनल स्केल है. ठीक है. Then types of measurement scale.
देन हमारा है इंटरवल स्केल, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट हैज अ मीनिंग। ओके, इंटरवल स्केल के अंदर, अब ऑर्डिनल स्केल में कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस के एट्रीब्यूट्स के वो मीनिंग नहीं है, इंटरवल स्केल्स के मीनिंग है, ठीक है। और बट इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, यानी कि हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंटरवल पता चल रहा है इंटरवल मेजरमेंट के अंदर, इंटरवल स्केल के अंदर, लेकिन उसमें जीरो एब्सोल्यूट नहीं होगा। लेकिन रेशियो स्केल is an interval scale, but it is a highly advanced shape of interval scale where we have a ratio zero, absolute zero, right? Up nominal scale, we have a categories, gender, ethnicity, right? ये हमने already discuss किया. Ordinal scale, ordered category, like we have a rank in classes, order of finish, like हमने इस order से चलना है, इस way से करना है, हमारे ranks हैं, राइट, CR है, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल, इक्वल इंटरवल, जैसे कि टेस्ट के स्कोर्स हैं, एटीट्यूड के स्कोर्स हैं, इंटरवल स्केल्स हैं जो हमने मेजर किए हुए हैं। जैसे लिकर्ट स्केल में हमने इंटरवल्स बनाए हुए हैं, 10 का इंटरवल, 3 का इंटरवल, 5 का इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल स्केल्स सामने होता है। रेशो, जिसमें हमारा टाइम, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ये जो इस टाइप के जो स्केल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ratio scale. The scientific method, now we are coming to the scientific method. A scientific method is a tool for framing our and framing the question, forming and framing the question. This is a tool, like how we can develop the question, how we can answer those question is called the scientific method. Like when we are using a systematic step, we are following the systematic step to answer those questions, this is called the scientific method. Collecting information to answer those questions is a scientific method, and revising old and developing new question is a scientific method, right? Like what is the scientific research, or what is a scientific method? It is that type of research and scientific method that where we are using some procedure or some, we are using some step to answer the question, to solve the problem, to find out new information, that is called the scientific research. Scientific method is a process for explaining the world to validate observation while minimizing the observer biasness. Like I already told you that we are using procedure, or we are following some step, systematic step, okay, systematic step when we are using, and we are minimizing observer biasness. Like we are totally minimizing the researcher biasness in our research, that is called the scientific research. It has many steps to describe the things we observe. Like, so how we can observe, there are many steps, many method in scientific research or scientific method we are using. Okay, its goal to conduct research in a fair, unbiased and repeatable manner. Like the those researches which are scientific based, which are having some systematic procedures, and which followed by systematic procedure, that there is a very less percent chance of biasness, that those researches are very fair. Okay, scientific method is a tool for forming and framing question, that already discussed. Collecting information, और हाँ ये तो हमने already discuss कर लिया. Then scientific method, ask a question. What we do in scientific method, first ask a question. Ask a question is same when you are selecting a problem. Like you can say that first step is identification of the problem. Yeah, selection of the problem statement. Find out the problem. That is a first step, right? Because it is a cyclic process. Systematic research or scientific research is a systematic process. First is a ask a question, or we can say identify the problem, selection of the problem, then define the problem. Whatever the question we ask and whatever the problem we select, we have to define it. What does it mean? Okay, we define that problem, we make hypothesis, or we make the significant, we describe the purpose of that problem, then forming a hypothesis, that after defining a problem we can make a hypothesis. Like this is the problem, this is the hypothesis, like this is my pre-assumption or pre-solution of this problem. Okay, and I will
test those hypotheses, conducting the experiment, testing the hypothesis. Then we are conduct the experiment to test those hypotheses. Then after testing the hypothesis, we get the information, we get the result. That result we have to analyze it. After analyzing, we draw a conclusion, and then after conclusion, we find out the conclusion, and then we communicate the result. Communicate the results mean we generalize the results to the population, right? We communicate the result to our audience. Okay. Basic term in research or in statistic or in educational research, what are the basic terms we mostly use? That is a variable, that I already told you. We have a different types of variables are, or variable basically hang that are a characteristics or a item, and are what you analyze and what when you use statistical method, like the thing, the characteristics you want to check, you want to measure, that is called the variable, right? Or on that variable you want to use statistical method, you want to get the information according to your variables, right? So variable basically term we mostly use in our researches. Then we have a data we already discussed. What is the data? Data are the different values associated with the variables. Data is plural and its singular is a data. Okay, data is a plural term, right? Data kya hai? Data is associated with variable. Like if I said student learning is a variable, right? So according to student learning, I have to get the data, and data is if students learning is academic achievement, I will get the score and results of the students. That will be my data. Okay, if I said behavior of the student, that the behavior of the student is a variable, and I have to get all the information according to the behavior, related to the behavior of the student, that is called my data. Okay, then we have a operational definition. Data values are meaningless unless their variable have a operational definition, universally accepted meanings that are clear to all associated with an analysis. Like operational definition, if you go through any article, or when you are reading the methodology of that article, there is mentioned operational definition of the variable, like how I am using that variable, like how I am getting or I am defining that variable in my study. That is called the operational definition, because many words have the different meaning. Okay, and their meaning is situation, varies situation to situation. So if I am saying learning of the student, my meaning is learning is academic achievement. Or if I only I'm saying students achievement, what does it mean students achievement? Then in operational definition I have to say, or I have to define operational definition of academic students. It means student scorecard, students final result, student midterm result is a my variable of achievements, आउटकम और अचीवमेंट. ठीक है, मतलब इन चीजों को सारों को बताना है. अब इफ आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी, like technology, how I will define use of aviators, that is also a technology, right? Use of multimedia, that is also a technology. use of mobiles, use of Wi-Fi, multimedia, यानी जिस चीज को आप जिस तरीके से यूज कर रहे हो, you have to define. In my research is key operational definition is this. Okay. uh, then our population. A population consists of all individual about which you want to draw a conclusion. The population is the larger group. Always the population, you already know what is population. Your population from which you are interested to get the result, or you can get the, sorry, not a result, you can get the data. Like अगर आप students पे काम करना चाह रहे हो, you are saying that you want to know about the students achievement, so population क्या है? Students आपकी population है, ठीक है. और स्टूडेंट्स लार्जर पॉपुलेशन होती है, लार्जर ग्रुप होता है, यू कैन नॉट हैंडल ऑल द स्टूडेंट. तो आप क्या करते हो, एक सैंपल ले लेते हो. वो सैंपल क्या होता है? वो पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन होता है जो पॉपुलेशन को टोटली रिप्रेजेंट करे. ठीक है,
जैसे आप क्लास में सीआर बनाते हैं, वो सीआर आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम्स बताता है। जब जैसे हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं किसी को कि वो जो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, सेम वे दैट इज अ सैंपल। ठीक है, सैंपल, ट्रू सैंपल वो होता है जो आपकी ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। पैरामीटर, अब पैरामीटर क्या है? अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब a characteristic of a population. Parameter, what is that parameter? Which is describing or defining the characteristic of population. Like my population characteristic is this. Like my population, if I am working on the students, my population is a student working, studying in some schools. Okay, और जो चीज मैंने measure करनी है, I will describe that that information or that characteristics. Okay, then statistics, और लास्टली स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब अ सैंपल, राइट। वो हमारे सैंपल को डिस्क्राइब करेगी, उसी के ऊपर हमने स्टैट्स लगानी है। और in some or other words, a variable is an image, concept, or a perception that can be measured. It should be kept in mind that a concept cannot be measured. ठीक है, हम वेरिएबल को क्या कह सकते हैं? कॉन्सेप्ट है, इमेज है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट हम कभी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये वेरिएबल, ये कैरेक्टरिस्टिक, यानी हम इसको कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करेंगे तो ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट दैट कैन बी मेजर, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम मेजर कर रहे हैं, that is a variable. It must be converted to some measurable form, and measurable form of concept is called a variable. Like जैसे मैंने achievement की बात की, learning की बात की, that is a variable और that is measurable। ठीक है, तो हमने इसको variable का नाम दिया। Examples of variable for human are height, weight, age, number, sibling, business income, expense, country of birth, capital expenditure, marital status, eye color, gender, class, grade, your economic level, all and everything is your variable. आप इसको easily measure कर सकते हो। Type of sampling, we have a different types of sampling, like sampling method है हमारे पास, two types of sampling है, probability sampling and non probability sampling है। probability sampling में वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें एरर ऑफ चांस बहुत कम होता है, जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। बायसनेस कम होती है प्रोबेबिलिटी में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। लाइक इट इज लाइक अ लॉटरी मेथड के, लाइक आपने जैसे नेम सबके इंक्लूड किए, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको अपनी पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन का ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपने डिफाइन करना है। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जस्ट आपने सबके नेम डाले, जैसे रजिस्टर पे आप सबके नेम है, आपने 10 का सैंपल लेना है, तो आपने क्या करना है, कोई भी 10 स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, या पर्ची डाल लेते हो और 10 पर्चियां पिक कर ली और कहा कि ये मेरा सैंपल है। सिंपल है। सिस्टमैटिक में आप केथ सैम्पलिंग कर लेते हो, केथ नंबर कोई भी, जिसको आप पॉपुलेशन को अपने डिजायर्ड सैंपल पर डिवाइड करके जो नंबर आता है, तो आप उसको कहते हो दैट इज माई केथ नंबर, आपने वो करने है। या लाइक अगर आपका थर्ड नंबर आता है तो थर्ड इज योर केथ नंबर, और आपने हर थर्ड स्टूडेंट को, यानी कि अगर आपने रजिस्टर से कर रहे हैं तो हर 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के थर्ड स्टूडेंट्स को आपने अपना सैंपल बनाना है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्राटा होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में को एक ग्रुप बना देते हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। लाइक हमारे पास मेल का एक ग्रुप है, फीमेल का एक ग्रुप है, तो आपने अपने सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज करके स्टूडेंट्स उठाए और एक और नया स्ट्राटा बना दिया, नया ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग ये होता है, हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं, उन डिफरेंट क्लस्टर में से हमने डिफरेंट सैंपल लिए और वो सैंपल भी क्लस्टर होगा डिफरेंट। स्ट्रैटिफाइड में ये होता है ना कि हमने एक स्टार्टा एक ग्रुप बना लिया। अब जैसे मैंने कहा कि मेल का एक क्लस्टर है, फीमेल का एक क्लस्टर है, तो हमने मेल के क्लस्टर में से कुछ सैंपल लिया, वो एक मेल का क्लस्टर अलग से बन गया, फीमेल के क्लस्टर से एक सैंपल लिया, फीमेल का एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्लस्टर आ गए। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें मैंने पहले बता दिया कि इसमें बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, इसमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग है भाई, अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो तो आपको सैंपल नहीं मिल रहा था, तो आपको जो मिल गया कन्वीनियंट, ये मेरे घर, मैं स्टूडेंट पे काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा मेरे घर के पास मेरा कजन स्टूडेंट है, तो मैं, मेरे लिए कन्वीनियंट यही था, मैंने इसको पकड़ लिया।
ठीक है। और मे बी वो ट्रू रिप्रेजेंटर ही ना हो पॉपुलेशन का। ठीक है। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कुछ कोटे जैसे दिए जाते हैं कि हमने 2% पंजाब से लेना है, 2% सिंध से लेना है, तो उसमें हमने वो परसेंटेज ले ली। तो मे बी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटर ऑफ योर पॉपुलेशन। तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो उस पर बहुत बड़ा सवाल आ सकता है। जजमेंटल के हम खुद जजमेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये सैंपल ट्रू सैंपल है और हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द जजमेंटल सैम्पलिंग। और स्नोबॉल सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है व्हेन यू डोंट नो वेयर एक्चुअली सैंपल इज एग्जिस्ट। ओके। तो आपको कोई एक बताता है कि आपका सैंपल वहां पे है, तो आप उससे डेटा लेते हो और देन ही रेकमेंड यू कि आपका अगला सैंपल इधर होगा, तो आप फिर उधर जाते हो, फिर वो रेकमेंड करता है। लाइक स्नो हम एक दूसरे को फेंकते जाते हैं ना, मारते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्नोबॉल सैम्पलिंग। यानी आप रेकमेंड करते जाते हो और आपको एक्चुअल में नहीं पता कि आपका डिजायर्ड सैंपल और आपकी पॉपुलेशन कितनी है और वो किधर एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, दैट इज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। राइट, थैंक यू।